Acha, okay. So John, Jim, Jay, and Jack have formed a band consisting of 4 instruments. If each of the boys can play all 4 instruments, how many different arrangements are possible? ठीक है, तो for the first boy, we have 4 of the instrument options, so it's 4 choices. Then for the second boy, we have 3 of the instruments option, so 3 choices, and then 2 choices, and then the last boy is left with the instrument that is left. So this will be our answer for it. Yes, you're right, Mukim. ठीक है. And for part B, I think इस पे प्याजा पे भी discussion हुआ था, so you guys should know. Okay, so what if John and Jim can play all 4 instruments, but Jay and Jack can each play only piano and drums? ठीक है, तो John and Jim जो हैं वो 4 instruments चला सकते हैं, but Jack और Jay जो हैं वो सिर्फ 2 चला सकते हैं. So we have to make sure everyone has an instrument. So John and Jim can pick any of the 2 instruments that Jay and Jack cannot. So they have 2 choices. एक उनमें से John चला लेगा, for example, if this is John, and then Jim is left with the other one, so that's just one. And then same way, Jay and Jack, Jay can pick any of the 2, either piano or drums, and then Jack is left with whatever Jay did not pick, or vice versa. So इन दोनों को हम add कर देंगे, and this will be our answer. अच्छा, for the homework questions, so I wanted कि we solve it, but not exactly give the answer. But if you guys just solve it, the answer आ ही जाएगा. It's not difficult ये वालों में, but बाकी वालों में हम actual answer भी निकाल लेंगे. So कोई problem now. Does anybody have any problem in this? One, now we can move on. Okay, I am guessing not. So let's okay, the second part. ठीक है, इसमें जो है ना उन्होंने हमें बता दिया है कि ये जो 2 लोग हैं, oh we are adding, okay I'm sorry, I think मैंने गलती कर दी है यहाँ पे. We are supposed to multiply. Actually आंसर 4 आना है ना, तो वो ऐड होके और मल्टीप्लाई होके दोनों होके आ रहा था, इसलिए I think I did it wrong, but you're right. I think we're supposed to multiply. Just give me a second. Yes, we are supposed to multiply. I'm sorry. ठीक है. Abira, is that, and Hamza, is that clear? I'm sorry, वो मेरा mistake था. ठीक है. Question number 2. अच्छा, I'll read very slowly so you guys have time to attempt it, and then फिर हम साथ solve कर लेंगे. So you rent 5 movies to watch over the span of 2 nights, but only wish to watch 3 movies on the first night. How many distinct sequences of 3 movies could you possibly watch? ठीक है, इसमें you might be thinking about applying combination, but इन्होंने यहाँ पे distinct sequences लिखा हुआ है. So I think कि you guys know कि क्या लगेगा. We are arranging. So I'm hoping you guys have attempted at least the first part. And इसमें we have, for the first movie, we have 5 options. For the second movie, we have 4 options. And for the third movie, we have 3 options. So this will be our answer. And I think it's 60. Yeah. Uske baad, your friend Fred wishes to borrow some movies to watch at his house on the first night. You owe Fred a favor and allow him to select 2 movies from the set of 5. ठीक है. So इसमें तो we are using the word select.
So it is 5C2 choices that Fred has, which comes out to be 10, I think. अच्छा, ये थोड़े से ना इजी क्वेश्चंस हैं. आई हैव ट्राइड एडिंग एक दो डिफिकल्ट वाले, बट अभी आप लोग का पहला क्विज है, तो आई एम और 60 अच्छा ओके. इट्स फॉर दिस वन कि हाउ मेनी डिस्टिंक्ट सीक्वेंसेस ऑफ 3 मूवीज कुड यू पॉसिबली वॉच. सो आपके पास जो है 5 मूवीज थी, तो अब पहली मूवी के लिए यू हैव 5 चॉइसेस, एंड देन जब वो देख लिया है, अब सेकंड मूवी के लिए फर्स्ट चॉइस तो चल मतलब 5 में से एक तो खत्म हो गई है, सो यू हैव 4 चॉइसेस, and then for the third movie you have 3 choices. So when you multiply you get 60 के distinct sequences हैं. Is that clear okay? No, अच्छा 3 फैक्टोरियल में ना वी आर अरेंजिंग, अगर हमारे पास 3 मूवीज होती तो हम उन्हें अरेंज कर रहे होते ऐसे कि सिर्फ 3 मूवीज हैं और तीनों देखनी है, तो अब पहली मूवी के लिए 3 ऑप्शन हो जाते, दूसरी मूवी के लिए 2 और फिर तीसरी मूवी के लिए 1, तो इट वुड बिकम 3 फैक्टोरियल. बट अभी जो है ना हमारे पास 5 ऑप्शंस हैं, और अब हमें उसमें से 3 सिर्फ सेलेक्ट नहीं करने, हमें डिस्टिंक्ट सीक्वेंस भी चाहिए. तो अब जो है पहली मूवी के लिए हमारे पास 5 ऑप्शन है, हम उनमें से कोई भी सेलेक्ट कर सकते हैं. फिर दूसरी मूवी के लिए 4 हैं और तीसरी मूवी के लिए 3 है. इसलिए वी आर यूजिंग 5 into 4 into 3 and not 3 factorial. It's the same thing. Oh, sorry. Okay, it's the same thing as 5p3. ठीक है. Yes, you will get the recording. ये जो है ना, जैसे मीटिंग खत्म होगी I'll upload it on LMS. उसके बाद question number 3. I think this is also from your homework. अच्छा, I have like 10 questions here, and अगर time मिला तो we will try. One इसमें से I think 4 are from your homework and then rest are from outside. So from a group of 8 women and 6 men, a committee consisting of 3 men and 3 women is to be formed. How many different committees are possible if 2 of the men refuse to serve together? ठीक है. I hope you guys have also attempted it. If anybody wants to answer, वरना I'll just go ahead. ठीक है, हमारे पास 8 women है and 6 men है, और हमें चाहिए 3 men in the committee, sorry 3 women and then 3 men. So if 2 of the men refuse to serve together, तो अब हम यहाँ पे 3 चीजें कर सकते हैं. फर्स्ट तो ये है कि हम दोनों men को ही ना लें. So अभी इस लेकिन डिसीजन से women की जो चॉइस है वो unaffected है. So out of the 8 women we can choose 3. And then out of the 6 men, अगर हम उन 2 को लेते ही नहीं जिनको साथ काम करना ही नहीं है, तो हमारे पास 6 में से 4 men बचे, और हम उन 4 में से कोई भी 3 ले लेंगे. This is our first option. Plus यहाँ पे plus होगा because it's or either we do this or we do something else. ये पहला हमारा हो गया. सेकंड में वापस since women are unaffected, वापस से out of the 8 women we can choose 3. Now out of the 4 men, वो 2 अभी हम हटा रहे हैं जो एक साथ काम नहीं करना चाहते, तो अभी 4 मैन बचे. उन 4 में से हम 2 को ले लें, और अब जो 2 मैन हमारे पास बचे हुए जिनको आपस में काम नहीं करना, उनमें से हम किसी भी एक को सेलेक्ट कर लेंगे. तो 2C1. This is our second choice. If you want, you could have broken it up like 8C3 करते हम, फिर 4C2, एंड हम कहते कि अब जो है ना एक सेलेक्ट हो गया 1C1 और एक हमने छोड़ दिया है, प्लस ये हम वापस से यही करते, एंड देन उस बारी में हम दूसरा वाला मैन लेते जो हमने पहले में छोड़ दिया. बट इट्स थोड़ा सा कंफ्यूजिंग, तो वी कैन जस्ट गो विद दिस. एंड okay, I can't tell you ये वाला आंसर though because I think it's the homework question, but yeah, this is how it will be solved.
Part B, two of the women refuse to serve together. तो हम वापस से same logic लगाएंगे. इस बार the men are unaffected. So it's out of the 6 men we choose 3, and out of the 8 women हमने पहले वो 2 हटा दिए जिनको साथ काम करना ही नहीं है. तो 6 में से we choose 3 women. This is one option, and then the second option is वापस से we have the men, and out of the 6 women we choose 2, and अब जो 2 रह गए who don't want to work together, उनमें से we can choose 1, and we'll get this. For the last part, 1 man and 1 woman refuse to serve together. Okay, so अब वापस से first एक option तो we don't take either of them, and हम बाकी लोगों में से ही pick कर लें. So out of the 7 women remaining, removing the one who doesn't want to work with the men, is one option is this, and then out of the men we choose 3. एक ही हमारे पास choice है. Then the second choice is कि हम वापस से remaining 7 में से 2 women ले लें, and the third woman we take, and remaining 5 men जो हैं, 5 men, उनमें से हम 3 ले लें, and the other man who doesn't want to work with this women is not included. And the last choice is कि हम remaining 7 women में से 3 women ले लें. The women who doesn't want to work with the men is not here in this scenario. Then from the men, we take 2, and we include the men who did not want to work with the women. And I think this will be our answer for part C. If there is any confusion, you can type it in the chat box, or you can just tell me, or now you can move forward. Question 5 from the homework. Okay, let me see question 5 क्या है, but yeah, अगर time होगा तो we can do that. Wait. How many different letter permutations? ठीक है, अच्छा, let's what we can do is कि हम at least इसमें से 6-7 questions कर लें, and then we can attempt question number 5 also. And अगर नहीं होता ना time, but I'll try कि हो जाए, so I'll just after this I can just talk to you and I'll tell you okay how we can go about it. Is that okay? What is 1C1 here? ठीक है, अच्छा, 1C1 is ये वाली choice में हमने अभी वो women choose कर ली है. एक ही choice थी और वो हमने कर ली choose, and she is the woman who did not want to work with the men. तो अब इस choice में वो men included है ही नहीं, but वो women है, क्योंकि we already had the scenario where men women दोनों नहीं थे. And फिर यहाँ पे second वाले में we have the men and not the women. Is that clear, Mukim? Okay. Now we have question number 4. How many integers greater than 999 but not greater than 4000 can be formed with the digits 0, 1, 2, 3, and 4 if repetition is allowed? ठीक है. So 999 or 4000. Greater than 999 means 1000, and then not greater than 4000 means ठीक है. तो यहाँ पे ना हमारे पास 4 digits होंगी, because greater than 999 1000 आता है, which has 4 digits, unit, tens, and so on. So for the first place, we cannot have 0 because that would be a number smaller than 999. So एक option हमारे पास, अच्छा हमारे पास options हैं 0, 1, 2, 3 and 4, which are 5 options हैं हमारे पास. इसमें से अभी पहली digit में 0 नहीं आ सकता क्योंकि वरना 999 से छोटा हो जाना है, and 4 भी नहीं आ सकता वरना फिर 4000 से बड़ा हो जाएगा जो भी नंबर आएगा. So we have essentially इसमें से 0 भी चला गया है और 4 भी चला गया है for the very first option. So we have 3 options. We can either have 1, 2 or 3. अब second place में any of these numbers can come. 0 भी आ सकता है, 4 भी आ सकता है, 1, 2, 3 भी आ सकता है. We would still be within this range. So we have 5 options here. Same is the case for
this tens digit, and same is the case for this units digit. So this will be the number of options we have, which should come out to be 375. Is that clear? लेकिन इसके बाद अभी हमने खत्म नहीं किया है, since not greater than 4000 है, which means less than equal to 4000. So 4000 is also included in the choices. So, but 4000 से एक ही combination से आ सकता है. So it's just one more combination. So our answer should be 376. I hope this is clear. इसमें किसी को why are we adding the one here? Because देखो हमने ये जो वाले options है ना, इसमें जब हम first digit के option रख रहे थे, तो we already removed 0 and 4 because 0 रखते तो छोटा हो जाता 999 से, और 4 रखते तो 4000 से बड़ा हो जाता. उसके अलावा हमने सारे कॉम्बिनेशन सारे ऑप्शंस इस 375 में कर लिए इंक्लूड. बट क्वेश्चन ने बोला व्हेन नॉट ग्रेटर देन 4000, व्हिच मींस वी आल्सो हैव टू इंक्लूड द पॉसिबिलिटी कि हम 4000 भी बना सकते हैं. लेकिन हमने यहाँ पे 4 को आने ही नहीं दिया था, तो ये वाली पॉसिबिलिटी सिर्फ एक ही पॉसिबिलिटी है. In only one case scenario can 4 come here and we can have a number less than 4000, which is when we have 4 here, 0 here, 0 here, 0 here. इसलिए ये एक पॉसिबिलिटी को हमने बाकी सारी पॉसिबिलिटीज में ऐड कर दिया है. So that's why we're adding the one. Is that clear? ठीक है. How many different paths are there from A, I think this is a homework question, yeah, to B that go through the circle point in the following letters? You can only go up or right along the grid lines at each move. ठीक है. I hope you guys have attempted it, but चलो let's try this. ठीक है. अब हमें A से B जाना है, लेकिन we have to make sure कि हम उस रास्ते में circle से होते हुए जाएं. So to get to the circle, we have to take 1, 2, 3, 4 steps in any direction, even if not like this. 1, 2, 3, 4. Anything you draw, you would have to take 4 steps regardless. So we have 4 ways of getting to the circle. लेकिन since हमने पढ़ा है कि repetition है, जैसे this is a right and a right and a up and a up. ठीक है. और सेम अगर कहीं और रास्ते से भी जाते हम, तो 2 स्टेप्स राइट आएंगे किसी भी सिनारियो में और 2 स्टेप्स अप आएंगे किसी भी सिनारियो में. सो व्हेन देयर इज रेपिटेशन वी हैव टू डिवाइड जो चीज़ कॉमन होती है उससे. सो फ्रॉम ए टू द सर्कल ये रास्ता है. अब सर्कल पे पहुंचने के बाद हमें बी जाना है. बी जाने के लिए वी हैव टू टेक 3 स्टेप्स, आइदर यूं करके या फिर यूं करके. एनीवे जैसे भी जाना है सर्कल से भी 3 स्टेप्स लेने. सो वी हैव 3 फैक्टोरियल. बट अगेन यहाँ पे हमें ऊपर से एक ही दफ़ा जाना है, लेकिन राइट जो है हम यहाँ से यूं करके जाएं या फिर ऊपर जाके फिर यूं करके जाएं, हमें राइट 2 लेने होंगे एंड ईच राइट इज द सेम फॉर अस, इट्स नॉट डिस्टिंक्ट. So we have to divide it by 2 factorial and we'll get our answer. Okay, I'm hoping this was clear and we can move to the 6th question. ये थोड़ा सा ना लंबा होगा. I don't know why I included it. I hope इतना मतलब इतने लंबे तो नहीं आएंगे, but let's आपकी practice अच्छी जानी है so we can have a look. You guys can try attempting it पहले and then we'll do it together. I'll give you 1 minute, yeah, 30 seconds, and then we can start.
Okay, guys, so a bus is going from Manhattan to New Jersey and makes 5 stops on the way. 3 persons, 3 people hoga. Okay. Enter the bus after it has started from Manhattan with 3 different tickets. How many different sets of tickets may they have had? Okay. So, अब 3 लोगों ने enter किया bus after it started from Mumbai. Oh, sorry, Manhattan. And they could have entered at the first station. पहले possibility है कि वो first station से enter होते या first stop से enter होते. अब उन्होंने इस stop से ticket ले सकते थे for the second stop, the third stop, the fourth stop, the fifth stop, or the final location, which is New Jersey. So they could have taken, they had 1, 2, 3, 4, 5 choices for the tickets. अच्छा ईमान, ये वाला क्वेश्चन करके आई आंसर टू योर क्वेश्चन, जस्ट लाइक बस हम जल्दी से वाला कर लें. ठीक है. सो दिस इज द, अगर आप फर्स्ट स्टॉप पे एंटर होते तो नो द bus is going from Manhattan and makes 5 stops. No, you have started from Manhattan. Now you stop at the first stop or the first station जहाँ पे एक बंदा एंटर हो रहा है, क्योंकि पीपल एंटर आफ्टर ऑलरेडी मैनहट्टन से स्टार्ट चले गई है बस ना, तो मैनहट्टन से जब वो फर्स्ट स्टॉप पे उतरी है वहां से लोग या रुकी है वहां से लोग स्टार्ट एंटरिंग. सो मैनहट्टन इज नॉट द फर्स्ट स्टॉप, जस्ट लाइक न्यू जर्सी इज नॉट द फिफ्थ stop, it is the final destination. So we started from Manhattan, we went to the first stop. अब यहाँ पे this is our first stop, first station. Whoever enters has 5 ticket choices. They can either go to the second stop and वहाँ उतर जाएं, third, fourth, fifth. Yeah, okay, so this is that. ठीक है. उसके बाद at the second stop a person could have bought a ticket for the third stop, the fourth stop, the fifth stop, or the final destination, which is New Jersey. So they have 1, 2, 3, 4 choices. Similarly, we have third stop ka, and ispe they could have bought the tickets for the fourth or the fifth or just NJ. So they had 3 ticket choices. So हम इनको circle भी करते रहते हैं ताकि we remember. Then at the fourth stop or the fourth station, they can just buy for the fifth or the final. So they have 2 choices. And then at the fifth stop, they can just buy the ticket for New Jersey because अब वहाँ जाके बस रुक जानी है. So we have 1 option. ठीक है? So if we add them up, we have 5 plus 4, 9, 10, 15 choices. ठीक है? So 15 tickets की choices available हैं हमारे पास, और इसमें से 3 tickets जो हैं वो select होने. So select होने, we can use combinations, and we have out of 15, selecting 3, we have 15C3 as the answer. Is that okay? Yeah, so 3 different, okay, wait, 3 people entered the bus after it has started from Manhattan with 3 different tickets. How many different sets of tickets may they have had? Are we saying the NJ ticket from stop 1 is different from the one from stop 2? No. The ticket is the same. लेकिन you could have bought, आपने पहले
if you buy it from stop 1, then it's different than buying it from stop 2, because अभी आप एक different stop पे हो. So that's why the ticket तो same ही है, क्योंकि NJ ही जा रही है बस end में. But आपने जहाँ से जिस रास्ते से खरीदा है, it's different ना. You didn't buy it from the first stop, you bought it from the second stop, so it's different in that way. Does that make sense? So if they're saying 3 different tickets, they mean different in the way that you just stated, right? Not in the sense that they're different के एक second stop वाली होगी, एक third stop वाली होगी. No, not in that way, in the way that I explained abhi. Right, okay, thank you. सही है? ठीक है. Okay, this is. अच्छा guys, हमारी जो meeting है, it's will go over time. It might, because अभी हम question. Okay, it might not also, but if it does, you can rejoin. I'll also rejoin, and we'll start from wherever we left off. अभी 9 minutes रह गए. उसके बाद let's see. ठीक है? So this is a homework question. 7 different gifts are to be distributed among 10 children. How many distinct results are possible if no child is to receive more than 1 gift? ठीक है. I think I got an email yesterday about this question. थोड़ा सा tricky है ये, but if you think about it, so you might already know the answer, and आपने homework किया है, तो you probably should know the answer. हमारे पास 7 gifts हैं और हमारे पास 10 children हैं और हमको distinct results चाहिए, और no child can get a more than 1 gift. So for the first up to 7 gifts हैं, we can have 3, 4, 5, 6, 7. पहला gift can go to any one of the 10 children. ठीक है? अब वो चला गया है, तो second gift can go to any one of the 9 children. इसमें we will obviously, since the number of children is more than the number of gifts, so कुछ बच्चों को gift मिलेगा ही नहीं, but हमको सबको देना भी नहीं है, हमें सिर्फ distinct जो है results चाहिए. उसके बाद the third gift can go to any one of the remaining 8 children. The fourth gift can go to the remaining 7 में से किसी को भी, and so on, till the last gift can go to any one of the remaining 4 children. And this will be our answer. Is that okay? ठीक है, so I'm guessing it's okay because कोई कुछ कह नहीं रहा, so we'll move on to 10p7. ठीक है, yes. I'll also make sure. Yeah, okay. You're right. Okay, question number 8. ये वाला भी थोड़ा सा लंबा है, तो I think इसको खत्म करने तक शायद मीटिंग खत्म हो जाए, but उसके बाद के 2 थोड़े easy हैं. So let's try. You guys can try this, and then in like 30 seconds we can try it together. अच्छा ईमान, the gifts are different ना, that's why उनकी arrangement is mattering here. इसीलिए for the first gift, and this is the number of gift 4, 5, 6, 7, हम 10 बच्चों में से कोई भी एक सेलेक्ट कर रहे हैं और बस पहला गिफ्ट उसी को जा रहा है, और उसके बाद वो वाला गिफ्ट और किसी को नहीं जा सकता because it's gone. So we would not multiply it with 7 factorial. हम गिफ्ट्स को अरेंज नहीं कर रहे हम लोग, क्योंकि ऑलरेडी व्हेन वी आर गिविंग इट टू वन ऑफ द पीपल, ये वाली पॉसिबिलिटी आ गई है क्योंकि वो गिफ्ट यूनिक था एंड वो चला गया है, तो उसकी अरेंजमेंट सीक्वेंसिंग डज कम इन दिस. Arrangement of gift is not important, yes,
the result of each child getting a distinct gift is what is important here. हमें अगर गिफ्ट्स अरेंज करने होते ना तो हाँ हम 7 फैक्टोरियल करते, बट हमें यहाँ पे गिफ्ट्स अरेंज नहीं करने. हम वी जस्ट हैव टू मेक श्योर कि ईच गिफ्ट गोज टू one child and that is it. So each child is getting one distinct gift, that is it. Does that make sense? I was saying कि for instance if जो number 10 हम कहते हैं कि number 10 is a toy right, तो अभी जो आपने वाली जो ये केस में तो we're restricting के जो ये वाला toy है सिर्फ first person को जा रहा है, but we're not considering कि what if ये वाला toy third को जाए और 8 वाला जो है वो 1 को आ जाए. तो इसलिए उसके लिए हमें like आपने like 7 चूज़ तो कर लिए बट ये 7 numbers भी तो आप उसमें shuffle हो सकते हैं, तो उसके लिए shouldn't we do 7 factorial? ठीक है. हमने ना यहाँ पे चूज नहीं किया, हमने यहाँ पे अरेंज ही किया है. जब हम चूज करते हैं इट्स डिफरेंट. अच्छा सी आई डोंट नो इफ दिस गॉट कंफ्यूज्ड या नहीं. देखो ये जो फर्स्ट वाला है ना, ये 10 गिफ्ट नहीं है, ये फर्स्ट गिफ्ट है जो आप फॉर एग्जांपल कह रही हो कि टॉय है. सो अब ये जो टॉय है इट इज गोइंग टू एनी वन ऑफ द 10, तो ये किसी को भी जा सकता है. तो हम ये पॉसिबिलिटी यहाँ पे 10 लिख के ले आए कि जो 10 बच्चे हैं उनमें से फर्स्ट बच्चे को भी जा सकता था, सेकंड को भी जा सकता था. तो दिस पॉसिबिलिटी हियर इज इंक्लूडेड ऑलरेडी. जरूरी नहीं है कि सिर्फ पहले बच्चे को ही गए. तो ये जो है ना, ये जो नीचे है ये टॉय, ये गिफ्ट्स हैं. उसके अलावा फॉर एग्जांपल दिस इज अ बास्केटबॉल. So we are including the possibility that it can go to any one of the 9 kids. So in that way it is arranged, if that is making sense. Yeah, so arrangement is not important of the gift, क्योंकि the possibility that the gift can go to any one of the children is included when we have all the 10 children for the first toy. तो अब इन 10 में से कोई भी आ सकता था, अब उसमें से जो भी आ सकता था वो सारी चॉइस इंक्लूड हो गई है. अब सेकंड गिफ्ट के लिए जो बच्चे बचे थे उनमें से कोई भी आ सकता था, तो दैट चॉइस इज ऑल्सो इंक्लूडेड बिकॉज हमने 9 लिख दिया है. तो हम सिर्फ एक पर्टिकुलर बच्चे को असाइन नहीं कर रहे, एनी वन ऑफ द 9 किड्स could have gotten it. Does that make sense? ठीक है. एंड अगर इसके बाद भी कोई कंफ्यूजन हो जस्ट ईमेल मी, आई विल ट्राई कि मैं और सही से एक्सप्लेन कर दूं. अच्छा, एंड आई think you guys should have attempted it. अब ना 3 minutes रह गए, तो I'll try going over it. But अगर time finish हो जाएगा तो please rejoin. I'll also start the meeting again and then we can complete it. ठीक है. So we have team A and team B. They're playing a match series until any one team wins 4 matches. And no match ends in a draw. So in how many ways can the series be won? So let's see. पहले बात तो minimum number of games खेलने पड़ेंगे 4. एंड इसमें पॉसिबिलिटी है कि चारों आइदर टीम ए जीत जाए या टीम बी जीत जाए. एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ गेम्स खेलने पड़ेंगे 7, बिकॉज हमें इन्होंने बताया हुआ है कि नन ऑफ द मैच विल एंड इन अ ड्रॉ. तो अगर 7 मैच खेले हैं उनमें से एक टीम ने 4 जीते होंगे, एक टीम ने 3 जीते होंगे. देयर इज नो अदर पॉसिबिलिटी, क्योंकि ड्रॉ तो हो ही नहीं सकता. या तो एक टीम 5 भी जीत सकती है, लेकिन हमने बोल दिया है कि जैसे ही कोई भी टीम 4 जीत जाती है वी विल स्टॉप एंड वी विल नॉट प्ले फर्दर. तो डजंट मेक सेंस कि एक टीम ने 5 खेले एक ने 2, बिकॉज अगर 5 खेले दे और ऑलरेडी द टीम won 4, so they shouldn't have played more. I hope that's clear. So we will include the possibility of number of matches. It can be 4, can be 5, 6 and 7. The question is not implying 4 matches series. No, the question is just saying कि जब भी कोई भी एक टीम 4 मैचेस जीत जाएगी तो we'll just stop. So it can be, if that's what you're asking, it can be more than 4 games, 4 matches. And less than 8. Yeah, less than 8 ये imply इसलिए हो गया क्योंकि क्वेश्चन ने बोल दिया है कि जो भी जब भी कोई टीम 4 जीत जाती है we'll stop. So अगर किसी ने 8 मैच खेले हैं, इसका मतलब एक टीम 4 जीती, एक टीम 4 जीती, which doesn't make sense. जैसे किसी टीम ने 4 जीतना है ना, हमने रुक जाना है, हमने आगे खेलना ही नहीं है.
so इसलिए 8 मैचेस नहीं हो सकते. I hope that's clear. ठीक है. And we'll just take a scenario where team A is winning and we can replicate it for team B because it will be okay. Guys, it's less than a minute. I think it's about to end. So let's just rejoin and then we can finish this question and the rest of the 2 questions. And फिर जो भी किसी ने homework का भी पूछा था, I think we can discuss that also. I'll see you soon. ठीक है. So we had the number of matches as 4, 5, 6, and 7. Now team A can win how many? A wins, and then team B can win how many? यहाँ लिख देंगे हम, and then the number of ways they can win. अच्छा, तो let's say कि team A won all of the matches, so team B lost all of them. 4 matches खेले थे, 4 जीत गई टीम में. And it can be done in only one way. So like out of the 4 ways, all the matches, out of the 4 matches, all the matches are won by team A. उसके बाद 5 मैचेस हैं. अच्छा, इसमें we have to be careful. अब 5 मैचेस हैं ना, उनमें से 4 टीम A ने जीते. अभी हम ना assume कर रहे हैं कि टीम A is the winner. So जितने भी मैचेस खेले हैं उनमें से 4 टीम A जीतेगी, and then we'll just multiply by 2 for the same case scenario for B to get the answer. तो अब 5 में से 4 जो है A ने जीते हैं और 1 जो है वो B ने जीता है. Now A can win this. The number of ways this can happen is out of the 4 matches C3, which will come out to be 4. अच्छा, this is, we do not say 5 में से 4, 5C4 or 4C4 because अगर 5 मैचेस खेले हैं इसका मतलब है कि लास्ट मैच जो है वो टीम A जीती है, because we stopped at the 5th match. उससे पहले हम नहीं रुके, इसका मतलब उससे पहले चारों मैचेस नहीं जीते थे A ने. 5th मैच उसने जीता है, तो लास्ट मैच तो जीतना ही है. तो वो वाली पॉसिबिलिटी हम, we know it is given, so we cannot manipulate that or choose that because it is what will happen. तो out of the remaining 4 matches, A जो है कोई भी 3 किसी भी तरीके में जीत सकती है. So 4C3, मतलब out of the 4 matches they can win in any of the 3 matches. So that's why we have 4C3, and the last match that they won, the 5th match, is fixed. So we cannot have that in an option. I hope this is making sense. Similarly, out of the 6 matches, again we are assuming कि A जीती है, तो they must have won 4, and then B must have won 2. The last match A ने ही जीता होगा, तभी हम 6th match पे stop कर गए. So again, from the remaining 5 matches that we had, include 6 को हटा दिया हमने क्योंकि 6 जीत रही है A. कोई भी 3 में से A जीती थी. So we had 5C3 ways, which is 10. And then from the 7 matches, again 4 जीते होंगे A ने, and then 3 जीते होंगे B ने, and जो 7th match है वो A ने पक्का जीता होगा, that's why we stopped. इसलिए out of the 6 remaining matches, we can choose 3 जिनमें A must have won, so we have 20. Now if we add these number of ways, we will get 35 ways in which team A can win. And I told you कि we'll just multiply this by 2 because जो अभी assume किया था कि team A जीती है 4 matches, same thing can happen, reverse कर दें, team B and then team A. So we multiply it by 2 and we get 70 ways in which the series can be won. Does that make sense? थोड़ा सा scary था question, but अभी solve करके, so it's just adding. Can you go over the number of ways column? ठीक है, हाँ. जब अगर 4 मैचेस खेले थे ना A और B ने, तो उनमें से अगर चारों A जीती है, तो there is only one number of way this can happen कि पहला भी A जीती, दूसरा भी A जीती, तीसरा भी A जीती, चौथा भी A जीती. So there's just one way this can happen कि 4 मैचेस में we are ending the series and it's won. अब लेकिन अगर 5 मैचेस खेले हैं,
तो ए ने 4 जीते हैं। अब हमें पता है कि जो 5th वाला मैच है वो तो पक्का ए ने जीता है, तभी हम रुक गए थे 5th मैच के बाद, हम आगे नहीं गए। सो दिस पॉसिबिलिटी ऑफ द 5th मैच बीइंग won by ए इज फिक्स्ड। अब जो रिमेनिंग 4 मैचेस थे उनमें से किसी भी 3 में ए जीत सकती थी, आइदर इन तीनों में या फिर इन तीनों में। सो आउट ऑफ द 4 रिमेनिंग मैचेस A can win in any 3. That's why we did 4C3. We did not do 5C4. That इसलिए क्योंकि एंड वाला फिक्स था। आई होप दैट्स मेकिंग सेंस। सिमिलरली अब अगर 6 मैचेस खेले थे तो 4 ए ने जीतने थे, तभी ए वुड हैव वॉन, एंड 2 बी ने जीतने थे। तो 6th मैच खेला ही इसलिए था, एंड वी स्टॉप देयर बिकॉज 6th मैच ए जीत गई थी। हमने क्वेश्चन में स्टैब्लिश किया था वील स्टॉप एज सून एज एनी वन ऑफ द टीम हैज won 4 matches. So 6th wala is fixed that A has won it. Now of the remaining 5 matches, A could have won any 3. That's why 5C3. And so on for if the number of matches is 7. Okay, does that make sense? ठीक है। And इसके बाद we only have 2 questions, and I think ये वाले थोड़े से easy हैं, तो ये तो जल्दी जल्दी हो जाने। So 20 players compete in a tournament. In how many ways can rankings be assigned to the top 5 competitors? ठीक है, again this is just permutation I think. तो 20 players हैं और रैंकिंग चाहिए हमें पहले 5 की। तो 5 रैंकिंग के स्पॉट्स हैं हमारे पास, 1st, 2nd, 3rd, 4th, 5th. First जो है वो any of the 20 players can come, and then second any of the 19, and so on. It is I think 20p5 होगा answer, but yeah, this is what we'll do: multiply, 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 multiply. And then in how many ways can the best 5 competitors be chosen? Now ranking is not being assigned out of the any 20. हमें कोई भी 5 best competitors choose करने हैं. So it should be, I'm going slow, I'm hoping कोई answer कर दे, but it should be 20C5. This is it. And then we have the last question. Garage employs 14 mechanics. अच्छा, इसमें अगर कोई problem थी ना ऊपर में, so just let me know, I'll go back, वरना we'll just do the last question. A garage employs 14 mechanics, of whom 3 are needed on one job, and then at the same time 4 are needed in another job, and the remaining 7 are to be kept in the reserve. In how many ways can the job assignments be made? ठीक है, अगर सबसे पहले तो 14 mechanics हैं तो 14 factorial ways हैं, but these 3 who are needed on one job are identical, तो उनकी arrangement जो है जब repetition होती है तो we would have to divide. Similarly these 4 and then 7 in reserve, and this will be our answer for this question. Guys, this is it for this tutorial. अगर इसमें किसी भी problem थी question में, we can go over it again, वरना why is this? अच्छा, the last question. In how many ways can the job assignments be made? I think हमने क्लास में भी ऐसा क्वेश्चन डिस्कस किया हुआ है। अभी ऊपर वाले में भी when we were assigning the people to the ranks, इसी तरह we are assigning the people to the job. तो अगर हम इसको ऐसे करके 14 जगहें बनाते या फिर तो any one of the people could have come here, any one of the people could have come here of the workers, sorry, mechanics. But उसमें से we also discussed कि जो लोग similar काम करते हैं या फिर when we are arranging books, job assignments is like arranging the books, but अगर similar books थी तो we were dividing. इसलिए we are not selecting कि हमें 14 में से जो है 3 लोग इधर भेजने हैं तो 14C3 कर दें. We are just assigning them in the job. So we have to know the ways for that. Does that make sense? I know थोड़ा vaguely बताया मैंने, but I am hoping it does make sense. But if it, okay, good.
सही है. अच्छा, उसके अलावा I think one of you asked for question 7. I'll look it up अभी खोल के. Otherwise, you guys can leave and I'll upload the recording. And if the person who asked, I don't remember, is here, they can stay. And अगर नहीं तो I'll. So this is an arrangement question basically. Yes, this is an arrangement question. Because we are asking in how many ways can the assignment be made. That's why. Can we name question 5 of the homework or of this tutorial? Acha, okay, of the homework. अच्छा guys, ऐसा करते हैं, I'll stop the recording here वरना बहुत लंबी हो जाएगी. And ये जो 2 questions हैं 5 और 7 I think homework के, वो हम अभी attempt कर लेते हैं. And जिसको भी stay back करना है, they have the choice, वरना you guys can leave. And just give me like 2 minutes or 3 minutes, I'll go over the question.